These are the topics of today's class. We'll try to cover up. If not, we'll try to do it in the next class. So today's topic is basically on field effect transistors. Transistors, as you all know, has got mainly emitter, bias, and collector. And there is something called a field effect transistor, which consists of source, drain, and gate. S stands for the source, T for the drain, and G for the gate. And they are called field effect. The reason they are called field effect because the field created by the gate controls the current. I should put it like that. I is a function of V and S, the gate source voltage. Now, gate, the source is where there is the charge carriers, they are injected and the drain is the charge carriers are ejected out. During this process, the gate plays a major role. The field introduced by the gate, it actually controls the current between the source and the drain. This is the whole idea. Now, before going into the details of how this transistor works and how we can take this to the nano level, where carbon nanotubes are used in these transistors, the important topic or the important concept that one has to have is between an ohmic contact and a Schottky contact. There are two types of contacts. In electronics, very often there is a contact made between a metal and a semiconductor. It's a contact between metal and semiconductor. Now, what differentiates a metal and a semiconductor is in a metal you have a formula, and in a semiconductor you also have a formula. What is the difference between these two? Formula in a metal and a formula in a semiconductor. Formula in a semiconductor is between the conduction band and the valence band. Okay, this lies initially in between, but as you if you have a p-channel, p-type semiconductor, the formula will shift towards the valence band. If we have an n-type, the formula will shift towards the conduction band. This is the whole idea, but it lies in between the conduction band and the valence band. In case of metal, it is called the highest occupied level at absolute zero, usually absolute zero. So it means that there is a Fermi level existing in the case of metals as well, but this is the highest occupied. There is vacuum. The one that is above it is called the vacuum. Okay. Now, another aspect of this metal is in the case of photoelectric effect. You might have heard a term called phi, work function.
जी सुना है ना पहले वर्क फंक्शन का नाम सुना है वर्क फंक्शन व्हाट इज दैट वर्क फंक्शन अच्छा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में व्हेन यू आर अलाउइंग light of certain energy and it strikes the metal surface and electron is ejected out. ये तो है ना photoelectric. What is actually happening? The energy of the electron is the difference between E of the electron. किस चीज का difference है? Incoming energy HQ minus 5. 5 is a work function. That means this is the energy the light needs to or the electron needs to overcome before going out. So this is the background. So this is actually so when you are joining a metal and a semiconductor, जब तुम मेटल एंड सेमीकंडक्टर ज्वाइन करते हो तो क्या होता है कि इसका जो फॉर्म एनर्जी है और जो इसका फॉर्म एनर्जी है वो दोनों अलाइन हो जाते हैं द फॉर्मिंग लेवल्स अलाइन फॉर्मिंग लेवल अलाइन Now, you need to understand that this semiconductor is not a pure semiconductor, not an intrinsic semiconductor. It is an extrinsic semiconductor. मतलब इसमें doping हुआ, इसमें dope. ठीक है. और we know that when the doping causes a shift in the energy level. तो इसका मतलब है कि एक conduction band, although it is an n-type semiconductor. Okay. So if it is an n-type semiconductor, initially the conduction, if this is the conduction band edge, this is balance J, तो तुम्हारा जो formula level होगा वो shift होकर यहाँ पे आ गया होगा, close to the conduction band. ठीक है. Now, when you are allowing a metal which has got its own energy level, when you are joining these two, what is happening? इसका formula उसको join करेंगे, formula rules join करेंगे, उसके अलावा another thing that will happen that is called band bending. This conduction band will bend. So the picture now will be this is the formula level of the semiconductor. इसका जो कंडक्शन बैंड ये ऐसे बेंड बेंड हो गया जिस पॉइंट तक बेंड होगा ये वाला जो पॉइंट है इसके बाद ये सैचुरेट हो रहा है ना ये जो पॉइंट है अप टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन ये जो विड्थ है इसको बोलते हैं तो डिप्लेशन विड्थ Now, if the doping level is high, by high means, let's say the donor and the acceptor.
if it is a doping of p-type or an n-type, if it is an n-type, if the doping level is more than 10 to the power 18 per centimeter cube, is the doping level, and it's also around 10 to the power 19, between 18 to 19 per centimeter cube. अगर इस लेवल का डोपिंग होता है, okay, then we say that it's an ohmic contact. Because it's called ohmic contact because since the charge carriers, newly formed charge carriers are present, so it will not, the current flow, current resistance comparatively lower. There won't be any huge resistance to the current or passage of current. However, if the doping level is less or low or less, that means say this donor level is less than 10 to the power 16 per centimeter cube, and the accepted level is, I think it lies between 17 to 16, less than 17 to 16, बहुत ज़्यादा difference नहीं है. Then we say that the contact made is a Schottky contact. Schottky contact होने से there will be a sufficient barrier to the carrier flow. There will be a barrier. So look, Schottky barrier unit. So this as BS. B stands for Schottky barrier. So there will be a Schottky barrier existing in this case. We are assuming that the band bending has occurred and there is a low or less concentration of doping done, and there is a Schottky barrier existing. Now the Schottky barrier can be represented as, in the case of an n-type, as Bs, that is a Schottky barrier, is equal to the work function of the metal, let's call it as phi, minus something that you might be knowing. This symbol represents electron affinity. Electron affinity. What is electron affinity? That means that the energy level between the conduction band, this is the vacuum level actually. Yeah, that's what it is, back. So the energy required by the electrons to go to the vacuum, get out of any sort of influence. So this is actually this electron affinity. ये तुम्हारा दिस इज वैक्यूम लेवल, ये डिनोट कर रहा है तुम्हारा फाई वर्क फंक्शन, है ना. सो दिस वन, ये जो छोटा सा बैरियर है, दिस इज योर शॉर्टकी बैरियर, दिस इज द शॉर्टकी बैरियर. ठीक है. तो ये अगर एन टाइप नहीं होकर पी टाइप होता तो क्या होता? ऑपोजिट होता, मतलब बैंड बेंडिंग ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसा होता. ठीक है. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इफ एट पी टाइप, पी टाइप में भी मान लो यहाँ पे तुम्हारा एफ, और
और यहाँ पे पी टाइप में क्या हो रहा है कि द फॉर्मूला लेवल इज क्लोज टू द बैलेंस बैंड, है ना। तो मान लो ये इसका बैलेंस बैंड ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हारी डायफ्राम लेवल पे यहाँ पर भी एग्जिस्ट करना है, यहाँ पर भी तुम्हारा एफ है, ई बी, ठीक है। यहाँ पर भी ई बी, यहाँ पे शॉर्ट की बैरियर है ये वाला, तो ये सिंपली ये शॉर्ट की बैरियर हो जाता है। सिंपली द सेम थिंग, ओनली थिंग ये जो टोटल तुम्हारा बैंड गैप है उससे माइनस हो जाता है। बैंड गैप माइनस फाई माइनस इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, दिस इज फॉर पी टाइप। ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप दोनों केस में बैंड बेंडिंग हो रहा है, उसके थोड़े से डिफरेंस है। अच्छा, व्हाई दिस शॉर्टकी कॉन्टैक्ट इज इम्पोर्टेंट? Somebody tells you we have two types of contacts, ohmic and you compare, this is the doping, doping is light, low, no sorry, यहाँ पे high, and corresponding is low. So there is a barrier existing, शॉर्ट की बैरियर एंड नॉट सच बैरियर existing. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट की बैरियर, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट की वाला जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पे द आई शुड से दैट the IV characteristics, IV current voltage characteristics is non-linear. Non-linear से मतलब है अगर मैं रिवर्स बायस करूँगा और फॉरवर्ड बायस करूँगा दोनों में there will be a huge difference. There will be a difference. So it is acting as if the total system is like a diode. ठीक है, total system like a diode. लेकिन this is acting as if the total system is like a metal. Because there is no sufficient amount of resistance to electron flow in any particular directions. तो इससे ये हम लोग बोल सकते हैं कि we can use this since there is a shift, there is a change in the current, nature of the current intensity flowing. इसका इस्तेमाल शॉर्ट का इस्तेमाल टू मेजर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस में हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ a switch, and second one is a rectifier. Switch तो लोग जानते हो, there will be off state and an on state. So the state where there is a flow of current is high, that is considered to be the on state. यहाँ पे लो है off state. Rectifier जानते क्या है? Rectifier AC to DC. जो डिवाइस AC करंट से DC करंट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर. ठीक है. उल्टा को क्या करते हैं? उल्टा जो होता है DC to AC, ऑसिलेटर होता है. सो AC to DC क्यों करता है? बिकॉज AC का पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स होते हैं, प्लस माइनस. सो व्हेन दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद अ डायोड और एनी डिवाइस व्हिच इज एक्टिंग लाइक अ डायोड, लाइक अ शॉर्ट बैरियर, ये क्या करता है? एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर. इसका एक पार्ट को ये डिमिनिश कर देता है. तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इट विल बी लाइक दिस. एक पार्ट को कंप्लीटली डिमिनिश कर देगा. ये तो लोगों ने पढ़ा है ना, लीनियर प्लस. तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो
So this Schottky barrier, it is a good rectifier since it is acting like a diode, and it is also acting like a switch. So इसका जो application है, now we will see that how these both the contacts, एक device है जहाँ पे हम लोग दो तरह के contact कर रहे हैं, एक जगह में Schottky contact, एक जगह पे ohmic contact, and that is in field effect transistors. So as I have told, FET field effect transistor में ये जो field effect word आ रहा है, this is basically due to the field created by the gate and which is due to this gate source voltage, and it calls field created gate controls device current. Symbolically, field effect transistor is represented in this fashion. If it is an N type, this is G, this is source, and this is drain. और ये P type अगर होगा तो सिर्फ इसका जो arrow है वो उल्टा हो जाएगा. So what is actually its construction? इसका अगर construction के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो it's basically a semiconductor bar. ठीक है. और उसमें हम लोगों ने कम खुला है. Basically, there are two types of field effect transistors. One of them is called junction field effect transistors. One of them is called metal oxide field effect transistors. So we will start see a junction field effect transistor first. तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये दिस इज अ सेमीकंडक्टिंग बार, इट कैन बी अ पी टाइप और एन टाइप. यहाँ पे हम लोग जो करते हैं, वी क्रिएट ohmic contact or we create a Schottky contact at this site. ये जो साइड होता है यहाँ पे हम लोग एक Schottky contact, that means a metal and a semiconductor conductor with less doping concentration. So it's called this one as make a contact here. This is an ohmic contact. So the material is an N-type material. The base material है, अगर वो N-type है, जिसको हम लोग चैनल बोलते हैं, दिस कॉल्ड एन चैनल JFET.
मीन्स द बेस मटेरियल जो बना है वो है एन-चैन। तो ओमिक कॉन्टैक्ट हो गया और शॉर्टी कॉन्टैक्ट हो गया, सो दिस बिकम्स पी टाइप गेट। Also forms of P type. Both. So at the sides you have a Schottky contact, okay, and at the ends you have Ohmic contact. Okay. फिर हम लोग इसका सर्किट बनाते हैं, फिर बनाते हैं सर्किट लाइक दिस। यहाँ से so this becomes your this becomes your source S, gate G, and this is your drain D. Drain your ठीक है। सो जो लोग लेट में आए उनको मैं थोड़ा सा एक रिकैप कर देता हूँ। आज जो that we have decided to cover is field effect transistors। इसमें हम लोग will initially start with this one ohmic, what is an ohmic and Schottky contact। उसके बाद we will study what is an junction field effect transistor and what is an metal oxide field effect transistors, and lastly we will go to the nano level where we will see how carbon nanotubes can be used in making transistors। हाँ ठीक है, वो तो 5 6 वो बाद में देख लेना, तो पहले इसको देखो। सो while discussing this carbon nanotube field effect transistors, there are very important points, ठीक है, chirality, Dirac points, Brillouin zones। So first we need to start with what is that? What is that zone? We'll come to it. Is it condensed? Brillouin zones. It's French. Brillouin। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि Schottky और ohmic contact किस चीज़ को बोलते हैं। तो अगर मेटल एंड सेमीकंडक्टर में कोई कॉन्टैक्ट बन रहा है एंड इफ somehow the semiconductor is lightly doped, then we call it as a Schottky contact, or if it is a heavily doped semiconductor we call it as a ohmic contact। So the work function of the metal
is very important here. So in a semiconductor, we know that there are two types of semiconductor, p-type and n-type. So according to that, the Fermi level shifts. Fermi level is closer to the valence band for the p-type and closer to the conduction band if it is an n-type. तो मैं either p और n को मैं join कर रहा हूँ metal से. Metal का भी एक Fermi level है. So what is the next thing that is happening is that these two Fermi levels are aligning. So let's start with an n-type. Fermi level of the metal and Fermi level of the semiconductor दोनों align हो रहे हैं और align होने के कारण क्या हो रहा है? There is a band bending. इसका जो conduction band है वो ऐसे bend हो जाता है. And ये जो region है, this region that the bending is most prominent और इसके बाद जो saturation हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं depletion region. इसका एक width है, depletion width. तो Schottky, this is a Schottky contact where we have assumed that the doping level is less, ज़्यादा doping नहीं हुआ है. और अगर doping level high होता है तो we have a Fermi contact. So how we can define a Schottky level? We define it by a Schottky barrier. Called Bs, and it is equal to the difference between the work function of a metal. Work function of the metal है कि the energy required for a metal to eject an electron to evacuum, to vacuum. Or minus this value, if this value minus this value, this is the Schottky barrier. This is called a band bending. कंडक्शन बैंड ये बेंड हो जाए. तो ये हो रहा है एन टाइप के केस में. पी टाइप के केस में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा. पी टाइप के केस में बैंड विल बेंड लाइक दिस, ऐसे बेंड हो जाएगा और सिंपली द इक्वेशन विल बी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बाइंडिंग बैंड गैप का टर्म आ जाएगा. सेम थिंग. अच्छा, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हैविंग और द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ Schottky barrier? ये बेसिकली gives a non-linear IV plot. Okay, so this non-linear IV plot makes it be applicable in the case of a switch or a rectifier. Rectifier मतलब है जो AC to DC convert करता है. ठीक है. Okay. Now, इसका first application हम लोग देख रहे हैं in the case of a field effect transistors. Field effect transistor it consists of both Schottky barrier यहाँ पे at the sides and at the ends we have ohmic contact. तो इस केस में what is important is that since there is a Schottky barrier, so therefore there will be depletion. Depletion होगा along the length of the channel. Depletion कुछ ऐसे. Depletion. This is the depletion. And this depletion, so it is in reverse bias. The VGS is reverse bias. So what this depletion will do, it will add to the reverse bias. Okay, this will add to the reverse bias. This is a construction of a junction field effect transistor. Now, there is another type of transistor that is called MOSFET. It is also called IGFET. MOSFET और IGFET का मतलब है there is an oxide layer. So metal oxide भी बोल सकते हो, इसको तो इंसुलेटेड गेट भी कहा जा सकता है.
तो इसमें क्या करते हैं कि वी टेक वन एक सबस्ट्रेट लेते हैं और मान लो उसको पी टाइप करना है, पी टाइप और पी टाइप है पी चैनल MOSFET, इसको पी टाइप चैनल पी टाइप। So I will take an N-type substrate. यहाँ पे दो ऐसे बड़े बड़े जोन क्रिएट करेंगे जो कि पी टाइप, and then there will be an insulating layer at the top. And there will be metal contact. This is an insulating layer, mainly SiO2. This is an insulating layer. So this is the shape of a MOSFET, metal oxide field effect transistors. ठीक है, तो यही सेम स्ट्रक्चर, क्लोज टू दिस स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड व्हेन वी आर कंसिडरिंग कार्बन नैनो ट्यूब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कार्बन नैनो ट्यूब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी इस MOSFET का जो बेसिक डिज़ाइन है उसको लिया जाता है। Now before coming to the design, I would like to discuss why carbon nanotubes. Carbon nanotubes में ऐसी क्या खास बात है जिससे कि इसको लिया गया to make a MOSFET. तो जानते हो what is a carbon nanotube? Any idea what is a carbon nanotube? ट्यूब किस चीज़ का ट्यूब है? ग्राफीन का ट्यूब है. So you have a graphene. It is rolled. Graphene is rolled into a carbon nanotube. ठीक है? अच्छा, now graphene is called a semi-metal. Or it is called a zero band gap semiconductor. इसका मतलब है कि there is a conduction band and there is a valence band existing in the case of graphene, but दोनों में कोई गैप नहीं है.